All eyes on Jharkhand, where the Congress's legislative party meeting is underway in Ranchi. This after a day where the JMM and Congress MLAs spent all day in Khunti, about 30 kilometers away from the capital, where they were seen during the day enjoying boat rides on a picturesque lake, being ferried around in luxury buses. This in the backdrop of a deepening political crisis in Jharkhand due to the uncertainty over the Chief Minister's fate as an MLA. Chief Minister Hemant Soren's government in Jharkhand faces the threat of the Chief Minister being disqualified from the Assembly following a recommendation by the Election Commission for violating electoral norms by extending a mining lease to himself. The BJP, the petitioner in the case, had sought Mr. Soren's disqualification. Chief Minister Hemant Soren leaving the Latratu Dam guest house after meeting his MLAs to strategize on the future strategy of the impending disqualification and how to tackle that. So Hemant Soren, you can see, is on the bus with his MLAs. He's heading out of this Latratu guest house after holding a discussion with his MLAs here at the Latratu Dam. Congress and JMM MLAs were present here at this discussion. A show of strength by Hemant Soren as he faces disqualification as MLA and will have to resign midway through his term. An afternoon of bonding at a guest house overlooking a dam. Soren with Congress and Jharkhand Mukti Morcha MLAs with some boating as well. The message, they are together. हमारे जो तीसरे विधायक वो 30 हमारे साथ है। कांग्रेस के जो 17 लोग ऑफिशियली हैं उसमें अभी 3 लोग तो कुछ लीगल प्रोसेस में कलकत्ता में हैं और एक चूंकि न्यू मदर बनी है, 1 हफ्ता ही हुआ है रामगढ़ की जो एमएलए है उनका, तो इसलिए उनकी उपस्थिति केवल नहीं है, बाकी सारे लोग हैं साथ में। प्रदीप यादव जी भी हैं। Earlier in the day, all the MLAs were asked to attend a meeting at Hemant Soren's home, bag and baggage. Both the Congress and the JMM have plans to ring-fence their MLAs to prevent them from crossing over. Soren is likely to seek re-election after his disqualification and challenge the matter in court. I think Hemant Soren has very solid ground to challenge the Election Commission advisory and its ratification by the governor. But the BJP is keeping up the pressure on Hemant Soren. बीजेपी ने नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री अपने नाम पर आप लीज लो। Absolutely. बीजेपी ने नहीं कहा था अपने पत्नी के नाम पर आप लीज लो। बीजेपी ने नहीं कहा था कि आप अपने प्रेस सलाहकार को लीज में दो। बीजेपी ने यह नहीं कहा था कि अपने प्रतिनिधि को, विधायक प्रतिनिधि को लीज में दो। ये लोकतंत्र है। A flurry of meetings, a show of strength throughout the day, and the last meeting on the agenda, the Congress Legislature Party meeting under the leadership of the Congress's Jharkhand in charge Avinash Pandey, that's ongoing. But all eyes are still on the governor, who hasn't decided yet on Hemant Soren's disqualification, leading many to question the delay in the governor arriving at a decision. With camera person Habib Ali and Haribansh Sharma in Ranchi, Saurabh Gupta, NDTV. And as all eyes are on the governor and all are awaiting the governor's next move, the Congress MLAs have been holed up in a meeting strategizing their next move. That's right, Sarah. And in fact, let me take that question directly to Bandhu Tirke, who's a former Congress minister, also current working president of the Congress. Tirke ji, कांग्रेस तो आपके विधायक दल का मीटिंग चल रहा है। 3 आपके एमएलए पहले पश्चिम बंगाल में अरेस्ट हुए, पैसे लेके जा रहे थे, तो क्या एक डाउट है कि कुछ एमएलएस को अप्रोच किया जा सकता है, इसलिए ये मीटिंग बुलाया जा रहा है? और क्या सारे एमएलएस यहाँ पे रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये फितरत में ही है कहा जाए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जिस तरह विगत 3-4 दिनों से जो राजनीतिक वातावरण को जितना दूषित किया जा रहा है, मैं तो आपको दावे के साथ कहता हूं कि कई एक धन पशु यहाँ पर उतर गए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से ये व्यापारियों की पार्टी है। खैर, 2 विधायक को तोड़ो ये करना,
और इसी के कड़ी में उन 3 विधायकों को भी इसी तरह से बहला फुसला के उनको फंसाया गया, पूरा फंसाया गया क्या कि कहीं ना कहीं उनको हाथ कुछ हुआ होगा, जिस तरीके से उनके साथ में घटना हुआ। अब रही बात कि ये जो इनका जो मंशा है कि विगत दिनों में कुछ दिन में ये गठबंधन की हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार के द्वारा जो कई एक फैसले, बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इस फैसले से लोगों का दिल को टच कर रहे हैं लोग। सर मेरा 2 सवाल है, क्या अगर हेमंत सोरेन जी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो अगर कोई दूसरा नाम उनकी तरफ से बताया जाता है, क्या कांग्रेस उन दूसरों नाम के लिए राजी है? नहीं देखिए, अगर हो जाते हैं तब, तो अभी तो हुआ नहीं है, तो अभी हुआ नहीं है तो इस तरह से अभी बोलना, कयास लगाना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा निर्णय आता है तो विकल्प के भी रास्ते खुले हुए हैं, तो इसके लिए आपके जो गठबंधन के घटक दल बैठ करके निश्चित रूप से कुछ ना कुछ निर्णय लेगा। जो और बड़ी पार्टी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो निर्णय होगा, हमारे प्रदेश प्रभारी भी कहा है कि भाई उनका जो निर्णय होगा ये निर्णय सम्मान्य होगा, इसमें किसी तरह का कोई ये नहीं है। तो आप उनके निर्णय मांगे। आखिरी सवाल, क्या सारे एमएलए झारखंड में रहेंगे या उनको छत्तीसगढ़ या कहीं कहीं जो नाम जगहों की? अभी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर स्थिति उत्पन्न हुई है इसमें बहुत प्रिकॉशन लेकर के ऊपर रहना चाहिए। इनके द्वारा कुछ भी हथकंडा हो सकता है, किस तरह का भी बात किया जा सकता है, लोगों को ट्रैप करना, आपको सीबीआई ईडी के माध्यम से परेशान कराना। हम पहले ही कहा कि इनकी मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। ये लोग तो बोलते हैं कि नहीं हम तो कहाँ सरकार, हम तो सरकार बनाने के लिए हम तो ये नहीं है, लेकिन इनका मंशा क्या है कि एन केन प्रकरण में कुछ इसमें विधायकों का इधर उधर हो ताकि यहाँ पर 356 का हम उपयोग करें, उसके बाद सरकार समाप्त हो जाए। एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सो दैट वाज ऑफ कोर्स द कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट एक्सप्लेनिंग what the Congress's strategy is going to be. That meeting, Sarah, that you were talking about has already started. It is going on and it's being attended by Avinash Pandey, the man you heard in that soundbite a while ago, who was explaining what the Congress position really is. And the Congress in a way saying that, look, it's the JMM's choice who is going to be chief minister and we are okay with that as of now. But there is preemptive measures that are being considered, including the old tried and tested resort politics that seems to be becoming all too familiar these days.